Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders, where mentorship is a priority. I am Aliza Naqvi, and today the guest we have, I feel like, in order to introduce him, I'm going to use the word artist because he does have the art of teaching O levels biology. And when it comes to qualification, I want himself to introduce what he has done and what he has accomplished because I feel short of words. Yes, that happens to me too, guys. All right, apart from that, he has founded the Biology Enclave in 2010, which is a community. And under him, there are around 8,000 plus students who have passed O level biology. The highlight of this personality is that he has lost more than 50 kgs in less than a year. I was so intrigued by that. Let's welcome Mr. Umar Soni. Assalamualaikum, how are you? Walaikum salam. I'm doing well. How are you? I'm good. Alhamdulillah. How's everything going? Everything is good, mashallah. All right. Now, just to specify that you teach O level biology Yeah. and you're an artist. I Yes. love the theme that you have developed up till now, and we're just gonna start off with asking you any any moment that made you feel proud of what you do, or any student experience that still stayed with you over the past years. There are many students who have been with me, in fact, working with me right now. The moment of pride were there are a couple of them, but one of them I would share it with you. It was one of my students who was a doctor at the time of my grandmother's death. Okay. He was there looking after my grandmother, and when I asked him कि डॉक्टर साहब कैसा है सब कुछ, तो he was like, सर वो तो सब सही है, आप कैसे हैं? तो that was actually a moment of pride for me. That was Okay. like कि मैं खुद डॉक्टर नहीं बना, लेकिन मैंने डॉक्टर बना दिए बहुत सारे लोग. Bilkul, doctors, engineers, and so many people in different professions. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. A little about Biology Enclave. Can you talk about that? What is this community about, and what do these people do? Biology Enclave is actually a community of a group of people, and they are called as admins of this community. We do different activities like plantations, and we make students prepare themselves for O level biology. There are two events in the whole year. One is the paper for ATP, O level ATP paper for workshop. That is in end of 10 days of December. That happens every year. And a grand workshop that is happening in the month of March or April. The best part of this is it's free of cost. Okay. And I think ये मेरी सबसे बड़ी achievement है that I don't charge anything for that. For me, education is not an industry. It was a sector and it should remain a sector. So it's not an industry, it's not a money making industry. It's something that's a khidmat for the society. And I can tell from this conversation that you're very passionate towards it, but I would still like to ask what inspired you to be where you are today? Like what fueled you and what helped you to make this decision that this is the very thing that you want to pursue in life? Aliza, see, when I was in my O level in Foundation Public School, so that was my senior three, the last year of O levels. And I don't know what clicked me, but it was like this: if I want to do anything, I'll teach O level biology. And that was in the last year of O levels. I decided. Okay. And then I started making a path okay, how I have to enter into this profession. So people just told me that you need a degree to get the job. They never told me that you need a relevant degree. Okay. So you were talking about my qualification. So I never qualified in a science subject. After my O levels, I dropped into institute for my intermediate, and I did my intermediate in commerce. Okay. And I know all what I'm saying right now
may be very shocking for many people out there, but this is true. I have never graduated from any science subject. Even my graduation was in not in science, it was in social sciences. But what brought me here was my passion. See, there are two different things, two different arenas. One is that I know biology, and one is that I know how to teach biology. I'll take the second one. I know how to teach biology. All right. That's my thing. I wake up daily in morning at 6:15 or 6:30 max. I leave my place at 7:15 and I come back home at 11:30 night. And in that straight time I'm only teaching. And that's 7 days. Right now I'm sitting here. I know I have my class after 30 minutes. And that's true. So that's 7 days. That is 7 days a week. I get only 30 days of my off, and that's not 30 particularly, it's 20 days in my June. Alicia, the thing is that if you know what you are doing, your passion, तो आप कभी थकोगे नहीं. आप काम करोगे, आपको सुबह जाते हुए बुरा भी नहीं लगेगा, रात में आते हुए बुरा नहीं लगेगा, and next day you will doing something new. Whenever I want to do something new ना, I take something with myself. Like मैं फ्रिज से ब्रेड ले जाऊंगा और ब्रेड पे ले जाके स्कूल में मैं एक फूड टेस्ट करा दूंगा, Okay. तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. कभी कभी फ्रिज में फ्रीज़र में हार्ट होता है, तो वो हार्ट लेके चले जाता हूँ, हार्ट दिखा देता हूँ बच्चों को. तो इट्स ऑन डेली बेसिस आई डू समथिंग न्यू. Heart hota hai? I didn't get हार्ट, that. Sorry. द ऑर्गन हार्ट. You would have an organ heart in your fridge? यस. Oh, mom. Okay. तो वो अम्मी मंगवाती हैं कि पकाना उसको, मैं उसको ले जाता हूँ अपने साथ. तो वो हमारे फ्रिज में आपको जार्स मिलेंगे जिसमें लिटरली आईज होंगी, किडनीज होंगी छोटी छोटी सी, घर के फ्रिज में? ब्रेन होगा. Oh अब my वो मेरे घर God. वाले भी दे आर लाइक यूज्ड टू इट. बोला ठीक है तो उसे अब क्या कर सकते हैं. सो इट्स This, समथिंग there is दैट a pair of eyes looking straight back Yes. at you from the So- fridge. Oh my God. so it's something that I do daily to make my subject interesting. I don't care what happens, but one thing is for sure, I make everything do what my students love to do, and that's it. So you've been doing it for around 11 years, Yes. and there has been a generational shift in this Yes, era, right? yes, So how do you keep up with the kind of needs that your student have and the kind of expectations that they hold for you, or for any teacher that they have? Because see, no one is a biologist, no one is a physicist, or no one is even a chemist. No one is nothing the day they are born. They are actually made, they are mold. सही है. No one knows कि उसका passion क्या है. When they are born, no one knows that their passion क्या है उनका. They are mold towards that. You're true that there is a generational gap. The parental body is not same. The student body is not same. I'll talk post-COVID. It's totally changed. Students are more introvert now. The people are more introvert. They're like घर पे बैठेंगे आराम से अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे. But one thing remains same. That are the dreams that are actually of the students. वो same है. And I want to work with the dreams of the students. So let me ask you one thing. When you were in your nursery and KG, what were the colors that you liked? Pink And and purple and and blue. and red and yellow, the primary and some of the secondary colors, right? When you grew up, all that changed. All that changed. And that became the favorite colors became black, silver, white, brown. Yes. Have you ever thought why? Why? The dreams that have been ruined by some of the people like me, teacher. नहीं करो ये अलीज़ा, बैठे रहो, तुम नहीं कर सकती बेटा, तुमसे नहीं होगा. What about the dreams that Aliza have? Aliza never wanted to be
this what she is right now. She wanted to do something else. लेकिन people mold her to do that. चला, I'll ask you one more question. एक एक बच्चा है छोटा, वो पैदा हुआ, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो 3 साल का हो गया, माँ बाप क्या करेंगे फिर अगर वो बोल नहीं सक रहा, चल नहीं सक रहा? तो थेरेपीज कराते. थेरेपीज, वो मंदिर जाएंगे, वो मस्जिद जाएंगे, वो चर्च जाएंगे, वो हर जगह जाएंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो लाख रुपए लगा देंगे. ऐसा ही है. जब वो बच्चा बोलना और चलना सीखता है तो उसी के टीचर और उसके माँ बाप बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कोने पे जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना, चुप बिल्कुल. अब वो बच्चा ये बोलेगा कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ. मैं जब नहीं बोल रहा था तो अब लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलो पिन ड्रॉप साइलेंस. जनरेशनल गैप हैज़ नॉट चेंज्ड दिस मेंटालिटी. अभी तक वही है. बेटा वो ख़त्म हो गया ना, हड्डियाँ आपकी, गोश्त हमारा कुछ इस तरह था ना, वो खाल हमारी, पता नहीं कुछ तरह बोलते हैं. माँ बाप बोलते थे कि जी खाल रख लें, गोश्त देते उस तरह ना, बच्चों को उतना मारे. भाई अब वो नहीं है ऐसा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट कि मार नहीं सकते, ठीक है. एक तो पहली बात है, कॉर्पोरल पनिशमेंट और इस तरह की बातें ही नहीं होनी चाहिए. रूल क्यों बनाया जाए? रूल नहीं होना चाहिए. क्या हमारी नबी की सुन्नत है ये? नेवर. मेरे नबी की सुन्नत तो नहीं है ये, तो रूल क्यों बनाया गया? पता होना चाहिए था ना ये. But what about discipline? What methods do you think should be adopted? अगर discipline सिखाना है या अगर rules ना बनाए. Let's talk. Okay. Let's talk. What me and you and two people here in this room were doing before this podcast? We were using cell phones. Were we talking to each other? Never. We weren't. हम सब अपनी दुनिया में ना, सामने वाला क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता. सेम हैपेंस व्हेन वी आर. जितने लोग यहाँ बैठ के पॉडकास्ट अभी देख रहे होंगे वो भी तो अपने सेलफोन में देख रहे होंगे. सामने अपनी अम्मी अब्बू को तो देखें, दे वांट टू टॉक टू यू. या अम्मी अब्बू बैठ के देख रहे होंगे तो बच्चे से बात तो करें. मी टाइम ख़त्म हो गया, फैमिली टाइम ख़त्म हो गया. दैट्स ओनली वन थिंग एंड दैट्स द पिक्सल्स ऑफ द रील दैट आर मोर अट्रैक्टिंग अस. See, the book knowledge has finished. That's a disaster. वीडियोस पे आए, लेक्चर्स पे आए, वो ख़त्म हो गया. अब 45 सेकंड्स में एक रील में पूरा लेक्चर समझा दो तो ठीक है. नहीं है तो फिर एक्चुअली फोकस नहीं है. और फोकस इसलिए नहीं है कि वी डोंट टॉक टू ईच अदर. दैट्स द थिंग. Yeah. I do agree with that. We don't talk. Disaster है. Disaster है literally. I go into my class. You tell me that I'm a teacher. No, I'm not a teacher. मैं अपनी टाइम देखता हूँ, it's 45 minutes बस. मैं पढ़ाऊँगा. I don't know the girl sitting at the corner of my class or the boy sitting at the corner of my class, what he's going through. वो घर के कौन से प्रॉब्लम से आया है, वो घर से कैसे आया है, वो मुझसे डर के आया है, वो होमवर्क करके नहीं आया, कुछ भी नहीं. वो क्यों नहीं करके आया होमवर्क? आई हैव नेवर टॉक टू दैट पर्सन. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी 45 मिनट की क्लास के बाद एक और 45 मिनट की क्लास लेनी, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं. This was a sector. Now it's an industry. हम सब यहाँ कमर्शलाइजेशन के लिए तो बैठे हुए हैं. आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू. मतलब आफ्टर माई इंटरमीडिएट, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम सिटिंग तबानी दैट आई एम सेइंग दिस, बट आफ्टर माई इंटर आई हैव नेवर फाउंड अ टीचर लाइक सर समद दाऊद. आई हैव नेवर got a teacher like Miss Saima. I have never met a person like Professor A.W. Qureshi और नदीम खोकर. नो, वो obsolete हो गए. वो कहते हैं ना, वो मॉडल बनना बंद हो गए, वो बंद हो गए. I came into this profession, my passion was because I wanted to teach O-level biology. But when I came here ना, तो I got to know यार ये तो बहुत गड़बड़ है यहाँ पर. बहुत बहुत मुश्किल है आज सब कुछ.
फिर कोशिश कर रहा हूँ सही करने की, पता नहीं, आई डोंट नो सही होगा नहीं होगा. Oh, well, because you have that passion that fuels you, I'm sure you're in the right direction because you enjoy what you do so much. आई एम ट्राइंग टू बी ऑन द राइट डायरेक्शन. इट्स वेरी ग्लूमी, इट्स वेरी ग्लूमी आउट देयर. कभी कभी मेरे भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एंड इट्स लाइक लाइफ. Yeah. It happened to me in 2022. I was on my worst situation of my personal life. And everyone know that. It's an open secret for everyone. I don't know मैंने कैसे पढ़ाया क्या किया मुझे नहीं मालूम. It was in February when all that happened. And from February till April, it was like, okay, I'm teaching, but I'm teaching. I'm not doing anything. See, we teachers, artists, are the biggest actors, pata hai. When we enter school premises or college premises or coaching premises na, we put everything on one side, and when we enter the class we need to see the students की need क्या है. And we are not if we are not doing that, boss, I'm not a teacher then. That's why I don't call myself a teacher, I call myself an artist. Teacher is a big word. Please keep Maybe one day you'll find a way. No. Please keep it to Sir Samad Daud, Sir Sharif Tabani, Sir Wazirul Hassan. वो teachers हैं, literally. मतलब मैं on record बोल रहा हूँ. They are teachers. I'm not. Sir Khalid Mahmood Iraqi, Vice Chancellor Karachi University. He was my teacher. Sir Akhtar Baloch, Sir Shabibul Hassan. They are teachers. Sir Humayun, Sir Abu Zar Washti. They are teachers. They're literally teachers. मतलब Sir Samad Daud, literally, I'm telling you this. He used to teach us business maths in first year. He was like, यूं हाथ रखे, क्या हुआ, क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ. And he used to come to us, to every student, problem क्या है. And he used to pamper us like we were like हम 2-4 साल के बच्चे हैं. और वो एक एक क्वेश्चन कराते थे हमें, like the Samad Daud, right? बिल्कुल, absolutely. मतलब तो टीचर्स ये मतलब इसलिए आई एम सॉरी. No, it's all right. You're being very honest, and that is exactly why we wanted to have this podcast for you to be candid. And you talked a little bit about having issues in your personal life and maybe going through a bit of depression as well. Yes. So, having to gone through it yourself, and how do you advise or help the students who come up to you with not similar issues but who are also in that similar phase of depression? And because aajkal to like every 3 out of 4 people, like, or maybe even all of them, wouldn't be in a good place, and they would want, and generation these days, they want to be open to counseling, they want to be open to therapy, right? So what do you think you can do on your part for those kind of students? We can talk. Rather calling ourselves कि सर आप इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बता दें. Let us be more open to the students by saying कि उमर भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका सोल्यूशन बता दें. देखो, जब मार्च आता है ना, मार्च किसी भी ईयर का मार्च आता है, तो अप्रैल में हमारे एग्जाम्स होते हैं. स्टूडेंट्स खुद पढ़ सकते हैं, लिटरली every student can study on his own self because we have resources, we have many resources, right? The reason that student should come to us and what should we do with them is to talk to them, make their learning more easy. उनकी लर्निंग ज़्यादा आसान कैसे बनेगी? by talking to them. Yesterday in one of my class, मैंने उनको ऐसे बोला, और ये मैंने नहीं बोला, मेरे अल्लाह ने बुलवाया मुझसे. आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में बातें, मैं सोच रहा था रात में इतनी बड़ी बात कर दी मैंने. तो मैंने बोला भाई आज रात में 3:30 बजे आपका अपॉइंटमेंट है. बच्चे बोले 3:30 बजे अपॉइंटमेंट है. मतलब यस आपका अपॉइंटमेंट है, और आप लोगों ने 3:30 का अलार्म लगाना है, चलो अलार्म लगाओ सब. तो अलार्म लगाया. बच्चों ने बोला सर डिटेल में क्या लिखना है? मैंने लिखो अपॉइंटमेंट विथ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Wonderful. मैं अल्लाह एक बार रात देखो, फ़राइज़ पूरे करने हैं लाज़मी। फ़जर, ज़ोहर, मग़रिब, इशा, ये असर, ये नमाज़ें फ़राइज़ हैं, ये करनी है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क या कुछ ऐसा नहीं कि करनी ही नहीं करनी। 3:30 उठें, वज़ू करें, यू हैव योर अपॉइंटमेंट विद अल्लाह, तहज्जुद पढ़ें, एंड टेल हिम एवरीथिंग। ही विल सॉर्ट आउट, लिटरली ही विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग। Two things: get an hearing ear, someone who just hears you, listens you, बस वो सुने तुम्हारी बात। Get that person, number one, whoever that person is। कोशिश करो कि someone like तुम्हारी फैमिली में हो, anyone who's in your family, grab that person, बात करो उससे। And secondly, वो सारी बातें रात हो ना तो अपने अल्लाह को बताओ, अपने रब को बताओ। वो रब जो है ना, वो सारी मामलात कर देते हैं। आई स्टडी तो मेरी मेंटोरशिप अभी हो रही है। एक है जो मेरी मेंटोरशिप करता है, तो वो अक्सर बोलते कि रात रात बाकी तो रब राज़ी। Okay. तो अगर डिप्रेशन है तो मैं ये नहीं बोला कि डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता, बहुत बुरा होता है। डिप्रेशन बहुत बुरा होता है लीजा, कुछ भी करके डिप्रेशन सही नहीं हो सकता। लेकिन डिप्रेशन सिर्फ एक चीज़ सही हो सकती है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। बेटा आज लिटरली, आई नो मैं बहुत कैलपॉल वाली बातें कर रहा हूँ बहुत तकियानुसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम सब थोड़ी एक एक दो सुन्नत रसूल थोड़ी पूरी करना शुरू करें ना, और बस ये सोचने के अल्लाह इज़ द बेस्ट कंपेनियन आपके भी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई रूल नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी रूल बुक तो कुरान है। आई अर्ज एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस, प्लीज, इफ यू आर एन एल्डर वन, आप बड़े हैं घर में, आपसे कोई छोटा है, तो बात करो, कोई तो बात करो, उनसे बात करो। और उनसे फ़ौरन से ये बात नहीं करो कि गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा, ये नहीं। उनसे बात करो और फिर जाके काउंसलिंग स्टार्ट करें। हम अच्छी बातें क्यों नहीं करते? हम क्यों अच्छी बातें नहीं करते? हम क्यों बोलते हैं कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा? हम ये क्यों नहीं बोलते कि नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह बहुत राज़ी होंगे? अल्लाह की ज़ात तो नाराज़ हो ही नहीं सकती, और सबसे बड़ी दोस्ती उनसे है। तवक्कल है ही बहुत बड़ा गिफ्ट एक मुसलमान का। तो आई थिंक दैट it's beyond O level biology. It's beyond O levels and A levels. It's beyond everything. Definitely. बहुत सारी बातें आप समझ आते हैं अपने टीचर्स की बोली हुई, जो फील होती हैं, हाँ सही है। That's the thing. I wish this conversation could go on and on, but we do have a time limit, and I have to say this has been an awakening conversation, and thank you so much for your time. You're welcome, Lisa. It has been an absolute pleasure. The feelings are mutual actually. It was an honor to come here back again after 20 years, and everything is same. सब कुछ So Samadna would be same. हाँ, तू पढ़ेगा, तू ही पढ़ेगा, तुझसे ही होगा। तो these are the sentence that I do repeat in my class. बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग सब, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत फ़ख्र से बताता हूँ, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ऐसे टीचर्स मिले थे। आई गॉट सर ज़फ़र आलम इन इस्लामियात O levels. I got Sir Zia in O levels. I got some very good friends of mine in teaching industry. बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, लेकिन मेरा अल्लाह का बहुत शुक्र है कि Aliza coming here, if I can take a bit
of more time of yours. जी जी बिल्कुल. Coming here was a very hectic journey. मतलब मैं ऐसी गाड़ी में आते हुए सोच रहा था कि यार ये बात करूँगा लाजमी. 2009 was the year where I passed out my graduation. I graduated in 2010. And after that, for 3 years, I did do babysitting. I did car washing, having a master's degree of HR and marketing. I served as a caterer in a waiter, as in a restaurant, a multinational restaurant, as a waiter, not a manager. AC cleaner. I was a dog washer. That's a thing in Pakistan. Yes, घरों में था मैं कर obviously you need to earn your life, like you need to earn, right? बस I needed a break for, and अल्लाह खुश रखे उन लोगों को जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया. My school, where I am still right now, I'm teaching in Happy Palace Grammar School. I'm always in, like मैं हमेशा बोलूँगा कि they were the people who asked me to come and teach, and here I am. Here you are. And शुक्र. आई डू जेन्युइनली प्रे कि जिस तरह से आप सर समद दाऊद के लिए और बाकी टीचर्स के लिए, मिस साइमा के लिए ये कह सकते हैं कि दे वर टीचर्स एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम एज योर टीचर. आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ेंगे वो भी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ दे कैन से दैट दे वर वेरी ब्लेस्ड टू हैव समबडी एज यू एज देयर टीचर. Inshallah. Inshallah. Thank you so much for your time. You're welcome. This has been a lovely conversation. Thank you so much. Thank Thank you. you so much. Alright, guys, that is all for today. Sadly, we have to end it right here, but I will catch you guys again in another episode.